हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू बैक। तो आज हम पेपर 2 का साइंस सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि जो लोग सोशल साइंस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उन लोगों को साइंस एंड मैथ्स की ज़रूरत नहीं है पेपर 2 में, ठीक है। सो यू कैन स्किप इट, बट इन दोज हु आर गिविंग मैथ्स एंड साइंस, you please try to see the video, watch the video, right? So let me zoom it for you. Here it is. All right. सो एज यू नो, ये कितने मार्क के लिए है? ये 30 मार्क के लिए है, ठीक है। एंड इसमें सेक्शंस है। सो सेक्शन ए कितने मार्क के लिए है? 15 मार्क के लिए है, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। और 15 मार्क्स के लिए क्या आएगा? पेडागोजी आएगा। सी, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, ठीक है। ये सोने पे सुहागा है। एज वाई? बिकॉज पेडागोजी ही आ रही है 15 मार्क्स के लिए, विच यू विल बी रीडिंग। देखो, ये पेडागोजी आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो? आप इसको पढ़ोगे पेपर 1 सीडीपी में पढ़ोगे, और सब सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे। उसके बाद में पेपर 2 सीडीपी में भी पढ़ोगे, उसके बाद में और दूसरी सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे। तो आपका कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप पेपर 1 और पेपर 2 की सीडीपी अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। सो इट बिकम्स अ केक वर्क फॉर यू। सो इसमें कितनी यूनिट्स हैं हम देखते हैं। सो द फर्स्ट यूनिट 1 में क्या है देखते हैं। नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। नेचर, साइंस क्या है, क्यों है, कैसे है। सो नेचर ऑफ साइंस, देन व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, देन साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइंटिफिक नॉलेज, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन साइंटिफिक इंक्वायरी ऑल्सो, देन साइंटिफिक मेथड से हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बी डेवलप्ड इन आवर children, right? Now unit 2 is about लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, साइंस विद रेफरेंस टू एनसीएफ 2005। देखो, ये एनसीएफ हमने और कहीं भी देखा था, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी सब्जेक्ट में देखा था, बट वी हैव सीन दिस एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, साइंस विद रेफरेंस टू एनसीएफ, ठीक है। उसके बाद में वी हैव यूनिट 3 असेसमेंट। क्या क्या असेसमेंट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। ये हमने ऊपर भी देखा है in another video also we have seen this, right? Summative and formative assessment, the nature of assessment भी देखा है। then uses of CCA. what is CCA? Continuous and comprehensive evaluation assessment, I mean continuous and comprehensive assessment, all right। now recording and reporting भी हमको देखना है, how it goes। then assessment tools and techniques, तो assessment के लिए in order to assess we need some tools, right? tools and techniques, so what are the different tools and techniques we need in order to assess the child? We have to study that in detail as well, right? So let us just go down and see unit 4. So this is unit 4, approaches to teaching science. Now what are the different approaches involved in teaching science, ठीक है। different methods in teaching learning science, तो methods क्या क्या methods involved है in the process of teaching learning, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद में observation क्या है, experiments क्या है। see, science means experiments and observation, right? So hands-on activities, we see in science practical plays a very important role, right? So practical plays a very important role when we study about science or when we study science. So that's why science, see, as a science teacher we must be very much practical in our work, in our teaching, right? जो होता है, जैसे होता है, हमें as much as possible what we are supposed to do is that we should demonstrate that to the child, or अगर वो ऐसा कुछ टॉपिक है जो आपको क्लासरूम से बाहर जाके सिखाना चाहिए, then you should take the children out and teach them, show them how it's working. And the best part is to involve the children in the activities you are doing or you want the children to learn about, right? So involve करो, आप लोग involve करने की कोशिश कीजिए। whenever you are doing something, some activities, you try to involve the child in it, all right? So as I'm explaining this, there is one very important quote coming in my mind of Benjamin Franklin, which says that, देखो एक बच्चा क्या बोलता है, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn, ठीक है। tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn, ये किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। which means that whenever we are just explaining to the kids, they forget, right? And when we are teaching them, what do they do? They just remember, right? And when we are involving them, ठीक है, जब हम involve करते हैं kids को, students लोग को अपने classroom में, तब what happens? The learning takes place. Whatever we have discussed or whatever we are explaining or whatever the activity we are doing for the children, they will remember, they will learn from it, right? So this is a very beautiful concept by Benjamin Franklin.
Now I also, all right, hands-on activities. Now after this comes the concept of map, concept map, all right, ये क्या होता है इसे भी हम पढ़ेंगे. Then constructivism, ये आपने देखा है, उस वक्त से आप देख रहे हो Piaget's constructivism, और ये अलग से constructivism है. So these things are very important, so we have to deal with it in detail, right? Then now let us come to unit 5. ठीक है, unit 5 देखते हैं इसमें क्या है. Learning resources and classroom transactional strategies. Use of local resources. क्या resources? Local resources जो easily available हो. उसके बाद में टेक्स्ट बुक्स, उसके बाद में ICT, उसके बाद में laboratories, field trips, films, science exhibitions, use of locally available resources, alright. तो ये सब चीज़ है जिसकी हेल्प से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है. To make our studies more influential and effective, these are certain things we can adapt as teachers in order to make our learning very, very effective one, alright. So don't only be a teacher who teaches from the book. Be a teacher who uses different kinds of teaching aids, who uses different types of techniques or ways in which a child can learn. Example, we should take our students outside for field trips. For films, we should show them some videos, useful videos. Then also we should organize some science exhibition in the school premises, and we should encourage our children to take part in science activities, exhibitions. And also we should, it is not always possible for a teacher to buy the teaching aids and use it for teaching the classes. So at times what we can do is that we should be creative, right? Sometimes we should be creative enough so that we make use of locally available resources in order to build something useful from that, and this as a result will make our teaching more effective and easy for the children to adapt. All right, so now let us go to section B. उस समय हमने section A देखा है जो 15 मार्क्स का था. अब section B देखेंगे और section B भी 15 मार्क का ही है, ठीक है. section B में कौन सी यूनिट है? यूनिट 6 है, ठीक है. स्कूल साइंस कंसेप्ट, मतलब स्कूल में हम क्या सीखते हैं. कंटेंट एरियाज, देखो ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. ये सब आपको मिलेगी NCERT क्या है? यस, आपने जो बोला वही. सो NCERT क्या? NCERT बुक्स में हमें मिलेगा, ठीक है. ये सब टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा हमें. मोशन के बारे में मिलेगा, हीट के बारे में मिलेगा, लाइट्स के बारे में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में मिलेगा, रेस्पिरेशन के बारे में मिलेगा इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन लिविंग एंड नॉन लिविंग और बायोटिक एंड बायोटिक, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव, देन वाटर क्या है, एयर क्या है. सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स. ऑलरेडी ये सब बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं जो आपके एमटेट के सिलेबस में दिया हुआ है. सो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है, ईजिली. अगर आपको प्लांट एंड एनिमल सेल डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन रिफ़र टू सेकेंडरी बुक्स, बट अगर आपको सिर्फ ओवरव्यू ही लेना है तो यू कैन इवन रिफ़र टू द बुक्स ऑफ elementary level. So I will be explaining all these topics to you one by one when we start with the classes, all right. So this is social study, all right. So I think this was all about science. तो रुको मैं इसको, let me clean it up for you, let me erase all this. So science, as you know, it's a practical subject, so it is very much important as teachers for us to perform the activities and show the children so that they can learn it in the best way and never forget whatever they are learning, all right. So I think this is clean now. Let me zoom it. All right, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो. I hope you have already taken the screenshot. So this was all about paper 2 science. All right, this was all about paper 2 science. And remember that paper 2 science and maths are not for those who are opting for social studies. All right. So thank you everyone for being there.